Hello, everybody. Today we will be discussing Ielts writing essays, and I'm from Lark Immigration. My name is Harleen. Let's get started. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राइटिंग सेक्शन में 1 घंटे का टाइम दिया जाता है एंड विद इन दैट 1 hour यू हैव टू फिनिश 2 writing tasks. तो टास्क 2 को मोर वेटेज दी जाती है, इसीलिए वी विल बी फिनिशिंग इट इन 40 minutes and task 1 we will assign only 20 minutes. Task 2 you have to write 250 words or task 1 में 150 words. So I would recommend you finish task 2 first and then you spend time on task 1. Another recommendation would be कि आप कभी भी points में ना लिखें, you have to make clear and precise paragraphs. Paragraphs should be like introduction, body 1, body 2 और फिर conclusion. आगे we will be discussing different types of essays: opinion based, discussion based, problem based, advantage and disadvantage based, double questioned essays. We will be discussing all 5 types in detail next with examples. ओपिनियन बेस्ड एसे में क्या होता है कि एग्जामिनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है. आप अपना ओपिनियन देंगे स्पेसिफिक टॉपिक पे और ये ओपिनियन आपका क्लियर होना चाहिए. यू हैव टू क्लियरली से कि आप फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं उस ओपिनियन के. क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो सकते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं वेरिंग फॉर्म्स में. इट कैन से गिव योर व्यू, इट कैन से डू यू अग्री, डिसएग्री, व्हाट इज योर ओपिनियन, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, to what extent do you agree or disagree. The question can even start with should, do, does, is, जिसमें आपको अपनी suggestion देनी होती है whether something should be done or not. Do the advantages outweigh the disadvantages? Opinion based essays के examples अब हम cover करेंगे. 2 types. Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources. To what extent do you agree or disagree? जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें पूछा जा रहा है कि एनिमल्स की प्लेस है कि नहीं 21st सेंचुरी में, उनकी हम रक्षा करें या नहीं करें. तो हम इफ़ वी एग्री, what we can do is first body 1 में हम agree के points थोड़े से दे सकते हैं, body 2 में disagree के points दे सकते हैं, and conclusion में we can say that whether we agree with this point or whether we disagree. Another example, as more and more information is available online, the role of textbooks has become obsolete. Therefore, universities should replace traditional books with digital materials. Do the advantages of this situation outweigh the disadvantages? Again, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि ऑनलाइन मटेरियल जब पहले ही इतना अवेलेबल है तो बुक्स की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत. अब again we will say body 1 में advantages, body 2 में disadvantages. In conclusion we will say whatever is our opinion. हमारा opinion अगर e-books के साथ है, online content के साथ है या traditional books के साथ है, उसको हम conclusion paragraph में और introduction paragraph में भी बता सकते हैं. Should an ordinary man be given the license to keep a revolver and gun? अब इसमें भी हमें अपना ओपिनियन पूछा जा रहा है whether an ordinary man should keep one or not. Next we discuss discussion based essays. अब इसमें हमें दोनों व्यूज़ एक गिवन टॉपिक के बारे में देने होते हैं और इसको क्लियरली डिस्कस करना होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को और ओपिनियन देना होता है. Examples: as the number of cars increased, more money has to be spent on road systems. Some people think the government should pay for this. Others, however, think that drivers should cover the cost. Discuss both views and give your opinion.
अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि कार्स इंक्रीज हो गई हैं तो फिर गवर्नमेंट को पे करना चाहिए या ड्राइवर्स को पे करना चाहिए. And here we have to discuss both points. Body 1 में we will discuss government paying for this. In body 2 we will discuss drivers covering the cost, and then we will give our final opinion either in the conclusion or we can also give it in the introduction paragraph. Another question, some people believe that children of all ages should have extra responsibilities, for example, helping at home or at work. Others believe that outside of school, children should be free to enjoy their lives. Discuss both views and give your opinion. इसमें फिर से we will first cover extra responsibilities होनी चाहिए बच्चों की. In body 1. In body 2, we will cover children should be free to enjoy their lives, play in the parks, whatever. And then finally, in the conclusion paragraph, we will give our opinion. Which of the two opinions do we agree with? Next, we cover problem-based essays. Generally, these essays involve a problem related to which a student is asked to describe the causes, effects and solutions. हमें एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम के हमें कॉजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस बताने होते हैं. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर आपको सिर्फ कॉजेस और सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे तो आप सिर्फ कॉजेस एंड सॉल्यूशंस कवर करेंगे. पर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि सिर्फ सॉल्यूशन मांगे हैं effects के साथ या without effects. So pay attention to what the question is asking and only answer that. Otherwise, you are not answering to what is demanded by the question. Moving on to the examples. Overpopulation in urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems. अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है ओवर पॉपुलेशन की 2-3 और फिर वी हैव टू गिव solutions, what solutions we can provide for overpopulation, which government can provide, which individuals can provide. Moving on to the next question. Nowadays, many people have access to computers on a wide basis, and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games, and what can be done to minimize the bad effects? इस क्वेश्चन में आप पहले ये प्रॉब्लम को असेस करेंगे कि कंप्यूटर गेम्स का एक्सेस होना बच्चों को अच्छी बात है या बुरी बात, और उस बुरी बात को होने के लिए हम उसके बैड इफ़ेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज करेंगे, उस सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट बॉडी 2 में हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, बॉडी 1 में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड कंक्लूजन में हम दोनों को कवर करते हुए अपना बॉड ऐसे को राउंड अप करेंगे. नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बेस्ड एसेज. इसमें फिर से हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स मांगे जा रहे हैं. सो वी विल मेक सेपरेट पैराग्राफ्स. बॉडी 1 में वी विल कवर मेरिट्स, बॉडी 2 में वी विल कवर demerits, and then we will also conclude it in the concluding paragraph. Make sure your introduction is strong and powerful so that you have a good impact on the examiner. Advantages and disadvantages essay types के examples अब. People are becoming more famous with the help of TV programs and the internet. Discuss advantages and disadvantages. Very clear question. Here you're being asked कि TV programs और internet से लोग famous sensations बन जाते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है. So we will cover both. Advantages in body 1, disadvantages in body 2, and then round it up in the concluding paragraph. Another question, write about the advantages and disadvantages of living a traditional lifestyle. Very clear-cut question. You just have to discuss points about traditional lifestyle. Whatever points you want to discuss, but make sure it is in paragraph font.
Finally, last type is double question essay. इसमें आपको दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक टॉपिक से रिलेटेड एंड आपको इंश्योर करना है दैट यू आर आंसरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आर कवरिंग एवरी एस्पेक्ट इन 2 paragraphs within the word limit of 250 words as needed. And let's move on to the examples. Weddings are getting bigger and more expensive. What is the reason for this? Is this a positive or a negative development? अब weddings को आपने डिस्कस करना है कि इतनी बड़ी और इतनी एक्सपेंसिव क्यों बन रही हैं उसका रीज़न आप बॉडी 1 में दे सकते हैं एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट्स को आप बॉडी 2 में कवर कर सकते हैं whether you believe it is a positive development or a negative development. Again, make sure to read whether it's and या or. If it's and, then you cover both. If it's or, then you decide whether you believe it's a positive development या it's a negative development. Next question. These days, consumers are faced with an increasing amount of advertising from various companies. To what extent do you think consumers are influenced by advertising? What measures should be taken to protect them? इस क्वेश्चन में आपको कवर करना है कि एडवर्टाइजिंग का क्या इम्पैक्ट है कंज्यूमर्स पर और टू व्हाट एक्सटेंट पूछा जा रहा है डू यू थिंक कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड यू हैव टू मेंशन the degree of impact how much कितना impact होता है consumers पे advertising का और क्या measures ले सकते हैं consumers to protect themselves in body 2 so body 1 you mentioned to what extent body 2 you cover what measures should be taken and then you finally do the conclusion paragraph. That's it for today, guys. Thank you very much for joining us. I also want to mention that the next video that we will be releasing will be related to the writing tips, short tips, smart tips for writing, how you can enhance your writing in the Ielts exam in a better and efficient way. I hope you guys will join us. See you next time. Bye bye.